Hi guys, hope you all doing well. So today I'm going to talk about CAT 2018 3 months preparation strategy. Alright, from today you have 80 around days for your CAT and this is the most crucial time of your life. And so CAT is approaching. It's going to be on November 25th, so 80 days are left. So today I'm going to decide to kind of help you. I decided to kind of help you on 3 points: what to study, what not to study, and how to study. So stick around with me for next 10 to 15 minutes. And before you move ahead, check the description. I have put in Telegram link in there. This link is quite important to you because I'm going to be helping you guys on this group, by the way, for the rest of the year, with respect to the exams, like predominantly CAT, I'm going to give you weekly targets. I'm going to give you weekly homework, and we're going to discuss a lot of things out there. So yeah, so do join this group and let's get started with your main point, guys. First point, what to study. I'm going to segmentize it. So I'm going to talk about Quants first. If you're a beginner, if you're somebody who's been working on CAT from last couple of months, doesn't matter. You have to start from this. So the first and the most important part of your Quants is going to be arithmetic. You like it, you hate it, doesn't matter, but you got to be very good with arithmetic. Now, as far as arithmetic is concerned, arithmetic forms around about 30 to 35% part of your Quants in CAT. Now, your main focus is going to be arithmetic. So what you're going to do is, now, do not directly jump on ratio, proportion, percentages, profit and loss and all that stuff. Don't do that. Before you go ahead, right, what I want you to do is, even if you have somebody who's been working on it, or if you're somebody who's just a beginner, tyro kind of thing, I want you guys to work on your shortcut first, okay? So you need to work on shortcuts. Now, classes will call this something called as reciprocal. So this is a jargon which I don't like. I would say shortcuts. So you got to play with numbers first. You need to understand how to play with the numbers. You need to understand 1 by 48, 1 by 26, 1 by 90, all that shit, right? You need to get these things in place. So first of all, you need to understand the shortcuts. Does that mean that you understood the shortcuts and now you're going to jump onto the questions? No, don't do that. This is the biggest mistake that everybody does. You learn something and you get so desperate that you want to just take the book and knock off the stuff. Don't do that, right? Go step by step, do the shortcuts, then apply those shortcuts. What happens is you know the shortcuts, but you don't apply it. That's the main problem, right? So you learn the shortcuts. Now, where to learn the shortcuts from? Click the link above. I have put in 2 important videos on this. My first thing is that the most important thing is watch these videos first of all, and then practice. If you got a question, you can join the group, Telegram ones, and you can ask me questions on there. So the first thing is that arithmetic, understand the shortcuts, apply those shortcuts. Now, once you're done with that, now it's time for you to take the basic book. If you're my student, yeah, you can take the basic book and you can start working on percentages, you can start working on ratio and proportion, you can start working on profit and loss, so on and so forth. So, first thing that you need to do is take arithmetic, start working on basics. Once the arithmetic is done, then I would say you can move. Now, how much time it should take for you to kind of finish arithmetic? See, if you're sitting at home, agar aap velle ho, right? If you're vella, then one day for one topic. Simple. One day you can complete percentages, you can complete ratio and proportion. I mean, one day each, by the way, not one day in all, right? So then you can cover profit and loss, then you can cover interest, so on and so forth. Fine. So take these topics. I think one day, the whole day is important. Now, it's up to your IQ. आपको 4 घंटे में इसको cover करना है, 8 में करना है, 12 में करना है, कुछ भी करो पर एक दिन में knock off करो. अगर आप घर पे हो तो. If you're a working professional, then don't be so heavy on yourself. Give yourself 3 days. Maybe Monday, Tuesday, Wednesday. यार 3-3 घंटा कर लो, percentages निकाल दो. Now, पूरा percentages करना है या थोड़ा बहुत करना है, वो हम बात करेंगे how to study में. Fair enough. So what to study में आपको करना है arithmetic. That's number 1 as far as your mathematics is concerned, as far as your quants is concerned. Then we're gonna move to geometry. Okay. So geometry आप कर सकते हो arithmetic के बाद, and arithmetic होने के बाद geometry, and geometry होने के बाद then you can move to algebra. Anyway, algebra is something that you guys should be touching little later on. अभी उसको लेने का जरूरत नहीं है, but अभी फिलहाल आपका फोकस रहेगा arithmetic में. I will be creating couple of videos on quants जहां पे मैं geometry, algebra and arithmetic cover करूंगा. So yes, you guys can have a check on that. Now, as far as percentages is concerned, okay, what you guys can do is you can click the link above जहां पे मैंने बोला है आपको कि percentages के मेरे video है. You can check those things. Now, this is all about your quants. Now, what you should do as far as your logical reasoning and DI is concerned. Okay.
LRDI का एक वीडियो आएगा अगले 2 दिन में जहां पे आप देखोगे कि एनालिसिस कैसे है एंड आपको करना क्या है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ इज, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैट. LRDI को अगर आपको टैकल करना है, सो लॉट ऑफ पीपल विल सजेस्ट यू कि आप मॉक्स देना चालू करो. ठीक है, आई थिंक दिस इज ट्रू, दिस इज ओके, बट is this completely true? It's not. What I want you guys to do is, first of all, start doing little bit of practice. ठीक है, let's go step by step. पहले प्रैक्टिस करना चालू करो. Now, जहां तक लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, अगर हम कैट के बारे में बात करते हैं, and I'm gonna give you a brutal review about this. If I talk about CAT, see, nobody has fucking clue what's going to be there in LRDI as far as CAT 2018 is concerned. So everybody is giving you their own story. Everybody is trying to sell you their own story, right? You got to be smart ass. You're not going to fall for this shit, right? So what I want you guys to do is basically, जब लॉजिकल रीजनिंग का बात आता है तब डू थोड़ा बहुत बेसिक वाला चीज है. तो बेसिक में क्या आएगा? ब्लड रिलेशन आएगा, बेसिक में डायरेक्शन आएगा, बेसिक में आपका say you have Venn diagrams, all these things. Now you might not like these things to do, but you got to do this. Now let me kind of finish this, what you need to do here. So do the basic chapters like blood relation, direction, Venn diagram, get little idea about how the things are working. Uske baad what I want you guys to do is go back to CAT purana papers. So CAT का पुराना papers, yeah, you can start from 1991 से लेके 2009 का पेपर. ट्रस्ट मी, यही पेपर्स लेजिटिमेट है. इसके बाद जो भी पेपर जिस किसी ने भी डाला है वेबसाइट पे, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज एनीवे लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. बट यस, एटलीस्ट 1991 से लेके 2009 ये जो 20 इयर्स के जो पेपर है, ये एक्चुअली लेजिटिमेट पेपर्स है. बिकॉज 2009 के बाद कैट ने बोला था NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. सो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत कोई भी पेपर अलाउड नहीं था पब्लिश करना, जो 2017 में कर दिया था बिकॉज 2017 में NDA नहीं था. लेट्स सी 2018 में होता है कि नहीं. एनीवे, सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक स्टफ. ठीक है, पहले ब्लड रिलेशन के पजल्स करो, डायरेक्शन के पजल्स करो, थोड़ा बहुत वेन डायग्राम्स के पजल्स करो. ये करते करते आप क्या करो, आप कैट के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो. नाउ इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. डू राउंड अबाउट 15-20 क्वेश्चंस, गेट अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ हाउ द ब्लड रिलेशन वर्क्स एंड ऑल दैट. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू क्रैक LRDI as far as CAT 18 is concerned, yeah, you need to have one thing, and you need to train your brain to think logically. Okay, you need to be analytical. जब तक वो excuse me, जब तक वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स नहीं आएगी, आप LRDI क्रैक नहीं कर पाओगे. बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है LRDI में कि यार, सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि सर LRDI में 32 क्वेश्चंस आए थे, पंगा ये हुआ पता नहीं चला LR कौन सा है और DI कौन सा है, तो सर गूफ अप हो गया. एनीवे, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना है. LRDI के जितने भी सेट्स है उठा लो, जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं उठा लो. मेक श्योर दैट आप हर रोज थोड़ा थोड़ा DI करके, थोड़ा LR करके कर लोगे. नाउ जहां तक DI की बात है यार, अगर आपकी अरिथमेटिक अच्छी खासी हो जाती है, कैट के कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन से बहुत ही सेक्सी स्टफ है यहाँ पे. जो पुरानी जो क्वेश्चन पेपर्स थे, बहुत अच्छे सेट्स आए थे. पहले वो न्यूमेरिकल सेट्स को करना चालू करो. मैं जब DI की वीडियो बनाऊंगा तब मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि इट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी डूइंग ट्रेडिशनल डेटा इंटरप्रिटेशन. सो पहले आपको ट्रेडिशनल DI करना है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हो. सो दैट्स अबाउट योर LR and DI. नाउ when you talk about verbal ability, people have no fucking clue what's happening in verbal because ना कोई पोर्शन है, ना कोई गाइड है, ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी नहीं. सो वर्बल इज गोइंग टू बी अ पेन इन द एस. सो व्हाट यू गोना डू इज बेसिकली, एज फार एज वर्बल इज कंसर्न्ड, वी गोना फोकस ऑन रीडिंग नाउ. ओके, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर, व्हाट यू से, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर RC. या रादर देन डूइंग दिस RC, व्हाई नॉट जस्ट टेक लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट. डू पैरा जंबल, डू पैरा कंप्लीशन, डू ऑड वन आउट. एटलीस्ट ये चीजें तो करना चालू करो. तो पैरा जंबल का पहले बेसिक लेक्चर करो. क्लिक द लिंक अबव. ये मेरे क्लासरूम के लेक्चर्स है, 2 लेक्चर्स करो, ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ इसके, और इसके रूल्स आप पैराजंपल पे अप्लाई करो. आई कैन गारंटी यू विल हैव राउंड अबाउट 90% सक्सेस रेट. 9 क्वेश्चंस ऑन 10 you will be able to solve as far as पैराजंपल is concerned. And if you do not get in touch with me, I'll help you. So पैराजंपल पहले करेंगे, पैरा कंप्लीशन करेंगे, ऑड वन आउट करेंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रीडिंग चालू करेंगे. रीडिंग कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. बट हाँ, एज फार एज आपका RCs इज कंसर्न, डोंट गेट काइंड ऑफ वरीड अबाउट RCs एंड ऑल दैट स्टफ. यू स्टिल हैव 3 months विद यू, यू हैव राउंड अबाउट 3 months विद यू. तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम RC में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, बट हमारा ज्यादा फोकस अभी फिलहाल वर्बल एबिलिटी पे रहेगा, विच इज पैराजंबल, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट.